Hi guys, welcome back to class of flying. Here with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about the discussion of this paper. So this paper MEG7 जो आज ही हुआ था, आप लोगों ने कहा कि सर ये पेपर बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के साथ आया, तो जो आपने कहते क्वेश्चन पूरे पूरे वही हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि आंसर्स कौन कौन से होने चाहिए। तो डिस्कशन में सर सबसे ज्यादा टाइम जहाँ लगने वाला था वो था पोएट्री सेगमेंट, जो मैंने आपको कल बताया था, वो कल आपने वीडियो देखी थी। तो कल दो पोएट्रीज मैंने डाली थी आपके लिए, द हाफ ऑफ इंडिया एंड द लोटस, और दोनों का पेपर में क्वेश्चन है गाइस। देन व्हाट अबाउट अदर्स, क्या बाकी जो प्रेडिक्शन की थी उनकी है, डेफिनेटली यू कैन सी ऑल दैट। लेट्स स्टार्ट द पेपर डिस्कशन। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल इंग्लिश वीडियोस। हियर यू विल गेट एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर गुड मार्क्स। लेट्स स्टार्ट द क्लास। The paper we are having, explain with the reference of the context any four of the following passages. तो सर यहाँ क्वेश्चन लिखा हूँ मैं आपको ताकि आप इसको क्लियर कर पाए। And those who are going to prepare for the next papers, that is not those going to in December or June, उनको पता लगे पेपर में ये क्वेश्चन थे। Let's the first question we are having, that is the A part, my country in Thai day of glory past. I repeat, my country in Thai day of glory past are hello circle round Thailand and worshipped as a deity now lost. तो सर यहाँ आपने कहा सर ये कहाँ से आएगी, from where it was being taken? This is from Hub of India, आपने कहा by Henry Dorsey. So guys, the first answer is the Hub of India by Henry Dorsey. I hope ये तो आपने कंफर्म ठीक किया होगा कि पहला आंसर तो हमें आता है सर, that is the answer. Come on to the second one. Can the love come to Flora asking for a flower, that would of flowers be undisputed queen? The lily and the rose long had been rivals for that high honor. सर कल की क्लास डेफिनेटली याद होगी, जिसने लोटस को बताया था जहां लिली और रोज दोनों आपस में लड़ते हैं कि कौन होगा, और यहाँ पे गॉडेस ऑफ एक्ट्रेसेस आते हैं फ्लोरा के पास, उसको बोलते हैं क्वीनेस, अनडिस्प्यूटेड क्वीनेस को ढूंढ के दो, एंड दैट बिकम द लोटस. So I need to write on this one too. B part we are having love came to Flora asking for a flower. अब बच्चा मैं सिर्फ दो लाइन दूंगा ताकि आप इजी वर्कआउट कर पाए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका. That word of flowers be undisputed queen. तो ये हो गए दो. तो दूसरा हमारा था from the lotus by तो सर पहले दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं. अब आते हैं हम थर्ड के ऊपर. Now, and that is Thai golden light come down into my feet. I repeat, Thai golden light come down into my feet. My earth is now Thai playfield and Thai seat. So ये कहाँ से था? It is from the golden light by Shri Aurobindo. सर तीन हो गए, तीन के तीन वे एक्सपेक्टेड जो आप बोलते हैं पूरे वही हैं. तो यहाँ पे हम थर्ड की बात करते हैं. The C part we are having
The Golden Light by Sri Aurobindo. Now time to move to the other part. It's here. The Indian landscape sears my eyes. I repeat, the Indian landscape sears my eyes. I have become a part of it. To be observed by foreigners. यहाँ पे आंसर क्लियर होगा. To be observed by foreigners, they say that I'm a singular. The letters overstate the task as a background casually by reason SI. Background casually एक्सपेक्टेड थी पूरी तरह से और उसी का आंसर आ गया. तो पहले चार तो यही क्लियर हो गए. घबराए दो तीन जिन लोगों ने ये नहीं किया, अभी तीन बाकी हैं. उन तीनों वो दो पोएट्री आने वाली जो मैंने पूरी गई थी कि आने ही आ. तो यहाँ हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं डी पार्ट. द इंडियन लैंडस्केप sears my eyes. I have become a part of it. It is background carefully. By missing as well. तो फर्स्ट फोर हम कर चुके हैं, बाकी आते हैं फिफ्थ पे. I who have lost, I repeat, I who have lost my way and back now at a stranger's door, receive love at least in a small charges. So my grandmother's house by Kamla Das. My grandmother. तो ये तो आप क्लियर कर सकते हैं सर. दिस इज समथिंग दैट वाज बीइंग सेड बाय यू इन दैट वीडियोस. तो कंप्लीट वही आया. तो यहां हमारे पास आ गया आई रिपीट My grandmother's house by Kamla Das. So next we need to talk the good wife. सर ये तो सिर्फ इस लाइन से पता चला. कहता the good wife lies in my bed. The good wife lies in my bed. अब यहाँ पे हमें क्लियर करना जरूरी है. The good wife lies in my bed though the long afternoon. Though the long afternoon. Now dreaming still unexhausted. Dreaming still unexhausted by the deep roar of the funeral praise. By the deep roar of funeral praise. It's all about Indian summer. Indian summer by Nal Jain Mahapatra. So here we are having that part. Indian summer by Jain Mahapatra. So now time to discuss the last, not the least. I can smell violence. I repeat, I can smell violence in the air, like the lash of coming rain. Mass hattered, drifting grey across the moon. Drifting grey across the moon. So it is Lamination by K.N. Daruwala. From Lamination by K.N. Daruwala. We are having
So these are the 7 poetry जिनमें से कोई 4 आपने चूज करनी थी for the reference to the contest and I hope कि जो 4 आपने की होंगी वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए. Time to come to the next question. Straightforward question है. अब ज़्यादा डिस्कशन में टाइम नहीं और टाइम खराब भी नहीं करना हमने. First question: Does Mulkraj Anand Untouchable provides a valuable solution? I repeat, viable solution to eradicate the untouchability. Sir, highlight करना plot, concept, Gandhi's contribution. ये आंसर में होना चाहिए था. I repeat, plot, concept, Gandhi's contribution. आंसर आ रहा आपके पास. Then second, we have choice. Discuss the issue from Rajaram कांतापुरा. किस इश्यू को हाईलाइट किया था कांतापुरा? हमें बता दोनों ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे. Whether you go for the untouchable or कांतापुरा, it's your choice. Third question. Write an essay on the role of the importance of Raja in Anita Desai's novel Clear Light of Day. So straight forward, राजा का कैरेक्टर कैसे बताया? इससे इजी क्वेश्चन नहीं आया कभी. चॉइस में क्रिटिकल कमेंट पता नहीं. राशि चौधरी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन. सर राशि चौधरी कल मेंशन किया था. राशि चौधरी या नेहरू में देख हो सकता है तो यहाँ राशि चौधरी आया. डिपेंड करता था अगर आपने वो कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं. नेक्स्ट वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 4. राइट एन एसे इन इश्यूज डील विद द सुभद्रा सेन गुप्ता द 4 डॉटर्स. 4 डॉटर वीडियो भी डाली है मैंने. पूरा आंसर भी बताया था आपको. स्टोरी लाइन पूरी क्लियर है. एंड दोस्त हु हैविंग द नोट्स ऑफ द लास्ट मोमेंट को पता था ये चीज ऑन टिप है. नेक्स्ट चॉइस बहुत इजी थी हमारे पास. राइट रस्किन बॉन्ड ट्रीटमेंट ऑफ नेचर इन अ शॉर्ट स्टोरीज. रस्किन बॉन्ड शॉर्ट स्टोरीज. सर लेपर्ड याद है आपको? वो पूरा कहानी बनाई थी. तो वो लेपर्ड 2 दूसरा भी हमारा उसका. सेकंड द लास्ट क्वेश्चन. Right next to the family as a character in Salman Rushdie's novel Midsummer Children. So Midnight Children को define करना है. फैमिली से बहुत स्ट्रॉन्ग बताता. उसका पूरे कॉन्सेप्ट को बताना है कैसे फैमिली चली उसको बताता है इस आंसर में. And the choice was really easy as compared to this one. What according to you the use of language in Mahesh Dattani's Tara? So this is the easiest paper we are having and as we expect वो सेम था. अगर ऐसे प्रिस्क्रिप्शन चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें. चीजें हाईलाइट करें. चेक करें वीडियोस को क्या जो मैं बोलता हूँ वही पेपर में आता है नहीं आता. देन दोस्त डन अ ग्रेट जॉब. कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा कि कुछ हेल्प हुई रही. टिल देन कीप वाचिंग गाइस. लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है. बाय गाइस.